Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. This is 8th class English lesson number 17. We were discussing about present perfect continuous as we have discussed something about introduction of present perfect continuous in our last video. In our last video we just have discussed about introduction. So the introduction was what is present perfect continuous. Clear? And the thing that we are going to do is translation of Urdu sentences. Now the overview today is how to form present perfect continuous and when to use present perfect continuous. As I have told you, the name of the sentence also telling you something, that we are going to talk about an action that is present and perfect. It's mean कि कुछ काम complete हो चुका है, and continuous it's mean कि अभी कुछ काम complete होना बाकी है, हो रहा है, in progress. Clear? Okay, usage of present perfect continuous. This is very important thing. For activities that started in past but have continued in the present. This is the definition of present perfect continuous, and this also can make you to recognize is it present perfect continuous or not. उसकी निशानी ये होगी कि उसमें कोई ऐसा एक्शन होगा जो पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा और अभी भी जारी होगा वो. Clear? For example, if you have to pause the video and make some sentences. You can make these sentences in Urdu. वीडियो की ब्रेक लगाएं और कुछ उर्दू के ही सेंटेंस बनाएं जिनमें आप जो है ना वो इस जो है ना वो शर्त को फुलफ़िल करें कि पास्ट में कोई काम स्टार्ट होगा अभी भी जारी हो. फॉर एग्जांपल आई विल से कि मैं 7 क्लास से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. क्लियर? मैं 3 साल से दूध पी रहा हूँ. Clear? Like this you have to make. For example, I have been traveling for a few years. Now he is basically saying that कि कुछ सालों से मैं सफ़र कर रहा हूँ, travel कर रहा हूँ. Clear? They have been writing letters since morning. Now you can see this is also an action that was started in past but have continued in present. He has been doing his homework for 2 hours. Clear? Okay, move towards the next key verb for present perfect continuous as we have discussed in our last video. The key verb. First step is helping verb. You have to keep in your mind that we always use has or have with been, not only have. Have been, has been. Clear? Okay, formation. Second step is form of verb. Which form of verb we have to use in it. Here is we are having verb ing, that is called present participle, ing form, fourth form of verb. Clear? So it's mean, so sentence will be Ali has been doing. Clear? Doing like ing के साथ. Changes, use of since and for before time. You know that कि इसमें always at the end of the sentence will be time और उससे पहले आपको since या for इस्तेमाल करना है. And in our last video we had discussed about where we use since and where we use for. Next, formation, subject, helping verb, verb ing, object plus since for plus time. Look at the example, you may understand. He has been writing a letter since morning. Now you can see here subject he, has been helping verb, verb ing, writing, object a letter, since morning because of point of time. Clear? I have been writing a letter for 2 days. Clear? Now you can see here same structure. You have to follow this key to translate these sentences. This is very important thing. Next, to have some practice you have to follow these steps, and the first step is recognition. You have to recognize is it present perfect continuous or not. For this you are having a key
एक्शंस स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड इन प्रेजेंट, ये उसकी अलामत होगी। क्लियर? उससे पता चलेगा आपको कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है या नहीं। लुक एट दिस, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2015, 2015 से मैं स्कूल जा रहा हूँ। येस, रिकॉग्निशन, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बिकॉज एक्शन जो है वो अभी तक कंटिन्यू है और 2015 से स्टार्ट हुआ है। क्लियर? ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, same, they have been learning English for few minutes. Clear? Very good. Next, second step is find out subject, verb and object, as well as you have to find out period of time and point of time that we have discussed in our last video. Point of time क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। जब स्पेसिफिक टाइम एक नुक्ते से आगाज़ हो रहा है वक़्त का, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा और वहाँ पर सिंस यूज़ करेंगे। और जब एक वक़्त का दौरानिया हो, दैट विल बी पीरियड ऑफ टाइम, यू हैव टू यूज़ फॉर दैट। क्लियर? मैं सुबह से नाश्ता कर रहा हूँ। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एज वेल एज यू हैव टू फाइंड आउट टाइम। इज इट पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम? यस, मैं सब्जेक्ट, सुबह से, सुबह का एक स्पेसिफिक टाइम है, दैट्स वाई पॉइंट ऑफ टाइम, नाश्ता ऑब्जेक्ट एंड वर्ब कर रहा हूँ। क्लियर? तलबा 2 माह से स्कूल जा रहे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट दीज 3 थिंग्स, 4 थिंग्स फ्रॉम दिस सेंटेंस एज वेल एज फ्रॉम दिस सेंटेंस। अमजद दिसंबर से इनाम हासिल कर रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस में से आप खुद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड टाइम निकालेंगे कि व्हाट टाइम इज़ इट पीरियड और इज़ इट पॉइंट। टू हैव सम प्रैक्टिस, थर्ड स्टेप, a table to put since and for. You have to learn that table. ये टेबल आप ज़ुबानी याद कर लें, so it will help you to make a good sentence and to make correct use of since and for. Yes, since we use with the point of time. Now you can see since 2 o'clock, अब देखें 2 बजते हैं तो ये एक स्पेसिफिक टाइम होता है। since Sunday, संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई भी दिन का नाम हो। सिंस अप्रैल किसी भी मंथ का नेम हो। सिंस 1990 किसी भी ईयर, कोई भी ईयर हो। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग जो भी हो, आफ्टरनून। सिंस लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे। क्लियर? सिंस लास्ट ईयर। And for, we use period of time, for 2 hours, for 4 days, for 3 months, for many years, for 5 years, for a long time, for 2 weeks and for 5 minutes. Clear? Now you can see ये सब period हैं, there is no a specific time. Next, and fourth step is formation. You know what is formation of present perfect continuous? Subject होगा, helping verb, verb ing, object plus since for plus object. Look at this, subject, helping verb, verb ing, object, since for and time. मैं 10 मिनट से दोपहर का खाना खा रहा हूँ। Now you can see here, I have been, helping verb, taking, verb ing, lunch, object, since, 10 मिनट से, since और for 10 minutes. Clear? 1 मिनट 2 मिनट से you know that के period of time है, that's why we use here for. Clear? तलबा मार्च से स्कूल जा रहे हैं। Students have been going to school since March. Okay, now you can see here subject, subject की जगह पर है, helping verb, have been, and verb, taking, ing, and object, now you can see lunch, and for, because of, period of time, and time 10 minutes. क्लियर? सेम जो है ना नीचे वाले सेंटेंस के साथ एरोज आप मैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज यू हैव टू फॉलो ऑन नाउ दीज स्टेप्स। अब आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस का ऑपरेशन करें। औरत सुबह से दूध उबाल रही है। रिकॉग्नाइज इट, इज इट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और नॉट? यस, थिंक अबाउट इट। वेरी गुड, दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बिकॉज टाइम जो है इसके अंदर है और अभी कंटिन्यू है एक्शन। क्लियर? एंड सेकेंड स्टेप, फाइंड आउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। जी, फाइंड आउट करें, ये यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं फाइंड आउट करके, यू कैन सी। एंड थर्ड स्टेप इज़ फॉर्मेशन। यू नो द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर को आप ज़ुबानी याद करें। क्लियर? व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विद बीन, वर्ब ing प्लस since, for and plus time. Clear? You use of since for the point of time and for the period of time. Look at this, this is an example. The woman has been boiling milk since morning. Now you can see here, देख सकते हैं आप ऊपर वाले सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू दीज 4 स्टेप्स ट्रांसलेट किया है।
Clear? Now this is your homework and daily diary. Follow the steps. इन्हीं steps को follow करते हुए आप इसकी translation करें. लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं. बच्चा 2 घंटे से रो रहा है. हम कई घंटों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं. Recognize, find out, formation and since and for. अब आप देखें इसमें since है या for है. सुबह से. Very good, very good. Point of time, very good. 2 घंटे से. Period of time, very good. For 2 hours. कई घंटों से. Period of time, not specific, very good. For many hours. Very good. Now look at this. People have been coming to the park since morning. The child has been weeping for 2 hours. Now you can see 4. And we have been waiting for you for several hours. Now you can see here 4. Okay, next is Akbar कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है. Now you can see subject Akbar, recognize and find out, then formation, then usage of since and for. Okay, मरीज़ 10 मिनट से चीख रहा है. चौकीदार 5 घंटे से पहरा दे रहा है. लड़कियां 7 बजे से हार बना रही हैं. Look at this. Akbar has been learning tables for several hours. Now you can see here for use of for कई घंटे से, not specific. मरीज़ 10 मिनट से, period of time, not specific. The patient has been crying for 10 minutes and the watchman has been keeping watch for 5 hours. Clear? Last, the girls have been making garlands since 7 o'clock. Now you can see here all steps. क्योंकि ये सारे steps को follow करते हुए इनको translate किया गया है. The thing that you have to do is to translate these sentences and write down on your registers. Clear? And do that activity and practice it again and again to understand it. I hope all of you are understand and remember us in your prayer. Thank you so much.